As a cyclone Ampan intensifies into a super cyclonic storm, Prime Minister Narendra Modi to chair a high-level meeting with Home Ministry and NDMA officials to review the situation. The cyclone is expected to hit the coast of West Bengal and Odisha by Wednesday. Today is the first day of lockdown 4.0. MHA issues fresh advisory to states, asks them not to dilute restrictions in the prohibited list. State governments announce new guidelines on lockdown 4.0. Karnataka allows cabs and public transport to run outside the containment zones. Complete curfew to be imposed on Sunday. Indian Council of Medical Research releases a revised strategy for COVID-19 testing. Asymptomatic, direct and high-risk contacts of a confirmed case to be tested once between day 5 and day 10 of coming into contact. The number of active coronavirus infections in the country increased to 56,316. 36,823 people were cured after treatment. The number of deaths stand at 3,029. India joins 61 nations to seek impartial probe into coronavirus crisis. Draft calls for impartial, independent and comprehensive probe into WHO's response to COVID-19 pandemic. And Brazil overtakes Italy and Spain as virus cases grow. Death toll nears 90,000 in the US. But in Europe, many countries including Spain and Italy set to further ease the lockdown as the situation improves. Hello and welcome. You're watching DD India and DD News with me, Munmun Bhattacharya. Our top story, the extremely severe cyclonic storm Ampan over central parts of South Bay of Bengal and adjoining Central Bay of Bengal moved nearly northwards with a speed of 13 kilometers per hour during the past 6 hours and lay centered at 5:30 in the morning today. That is the 18th of May, as per the Met Department. And this is over west central and adjoining central parts of South Bay of Bengal near latitude 13.2 degrees north and longitude 86.3 degrees east, about 790 kilometers south of Paradeep in Odisha, 940 kilometers south-southwest of Digha in West Bengal and 1060 kilometers south-southwest of Kepupara in Bangladesh. Rain or thunder showers are very likely to occur at a few places over coastal Andhra Pradesh and Yanam during the next 24 hours. Heavy rainfall is likely to occur at one or two places over north coastal Andhra Pradesh and Yanam during the next 24 hours as per the Met Department. Prime Minister Narendra Modi is set to chair a high-level meeting today to review the situation arising out of the super cyclonic storm Ampan, which is likely to hit the eastern coast. Union Home Minister Amit Shah said that Prime Minister's meeting with the Ministry of Home Affairs and the National Disaster Management Authority is going to take place today, and the Prime Minister is the chairman of NDMA. Home Ministry said that super cyclone Ampan is likely to hit West Bengal and Bangladesh coast with a wind speed of up to 185 kilometers per hour on Wednesday. And in an advisory to West Bengal and Odisha governments, the ministry has said that Ampan was spotted on Monday morning over the central parts of South Bay of Bengal and the adjoining Central Bay of Bengal. It has been moving nearly northwards with a speed of 13 kilometers per hour during the past 6 hours and lay centered at 5:30 in the morning on Monday. The storm intensified further into a super cyclonic storm by this noon, and heavy rainfall is likely to occur at isolated places over the district of Gajpati, Ganjam, Puri, Jagatsinghpur and Kendrapara.
Rainfall will commence from this evening. Multiple ICG disaster relief teams all along East Coast are kept on standby for immediate mobilization for search and rescue as well as relief operations. Ships, aircraft, maritime rescue coordination centers continue to relay information on Ampan to ships and fishermen out at sea. Nearly 90 fishing boats have been escorted to safe harbor by the Coast Guard units yesterday. The DG of the Met Department, Mrityunjay Mahapatra, has said that Odisha and West Bengal are going to be affected by the cyclone, and so the next few days are going to be very challenging for the two states. इसके प्रभाव ज़्यादा तक वेस्ट बंगाल में रहेगा और इसके बाद नॉर्थ उड़ीसा में रहेगा। जैसे वेस्ट बंगाल का साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट एंड वेस्ट मिदनापुर, कलकत्ता, हुगली आदि डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। इसके साथ साथ नॉर्थ उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर, इसमें भी इम्पैक्ट रहेगा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 110-135 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट पे। Ampan is very likely to intensify into a super cyclonic storm in the next 6 hours. The Met Department has issued heavy rainfall warnings for Gajpati, Puri, Ganjam, Jagatsinghpur and Kendrapara. Tomorrow, rainfall activity is set to increase in Balasore, Bhadrak, Jajpur, Mayurbhanj, Khurja and Cuttack. In Orissa and in West Bengal, a total of 37 teams have been deployed, out of which 17 are in deployment right now, with 3 possible additions in West Bengal, and that will be 20 teams actively deployed and 17 teams on standby. So to repeat, in West Bengal and Orissa, a total of 20 teams will be actively deployed by the end of this day, with 17 teams on standby. In Orissa, the deployment is in 7 districts and a total of 12 teams are deployed. In West Bengal, the deployment is in 6 districts and a total of 10 teams are deployed. Well, Ampan is very likely to intensify into a super cyclonic storm in the next 6 hours. The Met Department has issued heavy rainfall warnings for Gajpati, Puri, Ganjam, Jagatsinghpur and Kendrapara. Tomorrow, rainfall activity is set to increase in Balasore, Bhadrak, Jajpur, Mayurbhanj, Khurja and Cuttack. It is very likely to intensify further during next 6 hours into super cyclonic storm, and it is likely to move nearly northward for some time, and then it will move towards northeastwards and across northwest Bay of Bengal. It will cross West Bengal Bangladesh coast between Digha in West Bengal and Hatia Island in Bangladesh during afternoon or evening time of 20th May, and it will cross as a very severe cyclonic storm with maximum sustained wind 155 to 165 km per hour. In gusting, it will be 185 km per hour. Arresting media person, Odisha's Special Relief Commissioner Pradeep Kumar Jaina said that widespread rainfall in coastal Odisha is expected tomorrow. He added that there could be heavy to very heavy rainfall in northern districts of Odisha on 20th May. The cyclonic storm Ampan has in the meanwhile located itself around 770 kilometers, 780 kilometers down south of Paradip, and is moving in a northerly direction and is likely to move further in a northeasterly direction later. It is as per the estimation, in this sea it may convert itself to a super cyclone, meaning thereby that wind speed will be more than 230 km per hour, but within this sea. The Relief Commissioner also said that the administration is fully prepared to deal with any situation arising out of the cyclone. He further said that the rapid response teams and fire teams as well as NDRF have been moved to the districts which can be affected by the cyclone. So accordingly we are prepared. We have moved our ODRAF and NDRF teams, fire teams and also
We have moved large number of rapid response teams comprising of engineering equipments and tree cutting equipments of Forest Department, Public Works Department, Rural Development Department and Water Resource Department. Similarly, Energy Department is pre-positioning manpower, gangs and material. Both Urban Development Department and Rural Water Supply Department, both the departments have proactively started mobilizing alternate diesel generators, mobile tankers and standalone tanks. And let's take a look at the do's and don'ts to be followed in such a situation. Let's take you through those do's and don'ts for Cyclone Ampan, and the do's include checking houses, securing loose tiles, removing dead or dying trees, keeping some wooden boards ready so that glass windows can be boarded, keeping lanterns filled with kerosene, flashlights and enough dry cells. Also promptly demolishing the condemned buildings, ensuring that radio is fully serviceable, keeping your radio on and listening to the latest weather warnings, passing on only the official information, getting away from low-lying beaches or other locations which may be swept by high tides, being alert for high water in areas where streams of rivers may flood. Any loose and dangling wires from the lampposts should be strictly avoided. Houses and dwellings should be cleared of debris. So those are some of the do's during the cyclone that you can see. Any loose and dangling wires should be avoided in such a situation. Houses and dwellings, in fact, should be cleared of debris. Don't be misled by rumors and do not fan rumors either. Don't leave shelters until informed. Don't leave the safer place during lull. These are some of the don'ts that you need to do. Don't touch the loose and dangling wire from lampposts either. So those are some of the do's and don'ts that one must follow in such a situation. If your area is likely to be affected by the cyclone. Tapas is now joining us from the newsroom. Tapas, I understand that an orange message has been released. Give us more details on what this really means, and is this super cyclone likely to intensify further? Yes, orange alert has been given for tomorrow. In fact, today it's a yellow alert has been given, and tomorrow an orange alert has been given for Odisha. That will change when the cyclone will move towards West Bengal. Remember, in Odisha, 7 districts of coastal region of Odisha near Paradip port has been declared as critical places, and 6 districts in West Bengal. Especially the East Midnapur, 24 South and North Parganas have been given a warning that they should be braced up for the super cyclone. Now, having said that, the wind warning has also been issued that 110 to 120 kilometer wind speed, kilometer per hour wind speed, and that can almost go to 135 will run at around in the North Odisha, especially in the coastal region, and it will reach the gale's wind speed of around 175 kilometer, more than that, 175 kilometer in West Bengal on the 20th of this month, when West Midnapur district and Hooghly, Howrah and some parts of Kolkata will be getting affected by this super cyclone. So overall, one can say that this is one of the this super cyclone came after first super cyclone after 1999, and hence the authorities of both the state and the central governments are leaving no stone unturned to make sure that no untoward incident take place. In fact, all the coastal areas, especially in Odisha as well as in West Bengal, they've been evacuated, and most of the places where fishermen colonies were there, which used to have kacha houses, have been evacuated. They have been told to go to places where places which has been declared safe by the authorities. So there, and remember, you have to keep in mind that the situation right now is that the COVID-19 is right now, this pandemic is there in all over the country. So keeping in mind the SOPs and the protocol that is there, one has to keep the people in safe, and not just safe, that have to be kept at a safe distance. The social distancing protocol has to be maintained. Also, food has to be provided to people, because
because remember, if they have been taken out from their houses, from the kacha houses, they need to be provided food and water. Remember, after the destruction, after the trail of destruction that these super cyclone leaves, the most important part that people face after aftermath is the scarcity of food as well as water. In fact, most deaths happens because of the waterborne diseases. So authorities needs to are keeping a close eye on this and making sure that no casualty takes place at this time. They have been barred because of this orange alert and the yellow alert. As of now, everyone has been barred to go out in the sea for fishing activities, or for that matter any other activities in the coastal area. So all the precautions have been taken. People have been told many a times they are being taken. People are being provided with safe houses, places where they are supposed to stay during the course of this super cyclone. Murmur. Absolutely, Tapas. Thank you for those updates from the newsroom. And a correspondent from Kolkata, Anibrato, is now joining us for more details. Anibrato, give us details of how West Bengal is bracing for this super cyclone. Yeah, Munmun, we always know that particularly at this time, it's always the state administration acts on a standard protocol and on a guideline that they act on in coherence with the guided line by the center. So this time, the same thing is happening. The control room has been set up in Secretariat Nabanno, and even in the 6 districts that have been demarcated will be largely hit by this super cyclone Ampan. So it is tipped to make landfall between Digha in Bengal and Hatia Island in Bangladesh on Wednesday evening. So all precaution has been taken. Meanwhile, NDRF team has reached Digha, and they are doing the survey on the Digha coastline, and also they reached in the South 24 Pargana district. It's indeed a trying time for West Bengal because Corona pandemic is on rise in different corners. It's also a big advantage for the administration, particularly the tourists are not crowding the Digha seashore, particularly because this time we find always a large number of tourists there. But this time is wearing entirely a deserted look. But also, indeed, a big challenge for this thing because the person who are to be evacuated, they are to be taken to the cyclone protection center. But a standard protocol is to be made because the social distancing is to be followed. So, indeed, it's a big challenge. Yet of all these things, what we found in the last time when super cyclone Bulbul struck the coastline of the Bengal, when it barreled through the Bengal coastline, it didn't cause Right, Anibrato. So you are telling us about the preparations that West Bengal authorities are making as they brace for the cyclone, and in fact, there's news coming in that Prime Minister Narendra Modi is holding a high-level meeting with the Ministry of Home Affairs and the NDMA officials to review the situation. The cyclone is expected to hit the coast of West Bengal and Odisha by Wednesday. And our correspondent Sudhakar is joining us with more details. Sudhakar, the meeting is underway that the Prime Minister is chairing, and we have the visuals of the meeting already. So is the focus of the meeting to ensure that there is maximum preparedness and there is minimum damage when the cyclone makes landfall? जी बिल्कुल, देखिए और बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री न सिर्फ गृह मंत्रालय के बल्कि जो एनडीएमए के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, प्रधानमंत्री के एडवाइजर हो या फिर एनडीआरएफ के मुखिया हो, तो तमाम लोग मौजूद हैं इस बैठक में। और बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक और एक तरह से शीर्ष स्तर से प्रधानमंत्री एक सीधे संदेश दे रहे हैं कि जो ये पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है, खासतौर से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए, इसके अलावा पास के कुछ और राज्यों में जिसका असर हो सकता है, उस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र राज्य के साथ मिलकर तैयार है और तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये एक शीर्ष स्तर से प्रधानमंत्री जो लोग भी इस आपदा से प्रभावित हो सकते हैं उनको संदेश दे रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है, मनमोहन आपको याद होगा कि पहले जो तमाम आपदाएं आई हैं, खासतौर से अगर साइक्लोन्स की बात की जाए
तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये ऐसे राज्य हैं साइक्लोन प्रोन एरिया जिनको कहा जाता रहा है, और हर साल इस तरह की आपदाएं आती रही हैं। लेकिन इस तरह के प्रिपेयर्डनेस के चलते, प्रधानमंत्री जी की पर्सनल मॉनिटरिंग के चलते जान माल का नुकसान जो पहले के वर्षों में होता आया था, पिछले 5-6 वर्षों में हमने देखा है कि उसको बिल्कुल न्यूनतम कर दिया गया है। तमाम जानें बचाई गई हैं, हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। तो ये एक कोशिश है इस बैठक के जरिए कि हर वो मुमकिन प्रयास किया जाए इस आपदा से जो लोग प्रभावित हो सकते हैं उनको एक तरह से एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचाया जा सकता है, आपदा के बाद किन तैयारियों की जरूरत पड़ेगी। तो उन तमाम स्थितियों का मुमकिन है कि इस बैठक में मौसम विभाग के अधिकारी भी होंगे। तो एक पूरा जो सिचुएशन का असेसमेंट है कि कब से ये, क्योंकि हमको पता है कि अभी भी करीब 800-900 किलोमीटर दूर है जो कोस्ट से, जो अभी जो संभावना लैंडफॉल की वो बताई जा रही है वो 20 मई की आफ्टरनून को बताई जा रही है, जो दीघा जो कि पश्चिम बंगाल में है और हटिया आइलैंड जो बांग्लादेश में है, इन दोनों के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर ये लैंडफॉल होगा। लेकिन 20 तारीख को सुबह से, या कह सकते हैं 19 तारीख को रात से ही इसका असर शुरू हो जाएगा, और ये असर उड़ीसा के जो नॉर्थ उड़ीसा खासतौर से जिसमें 7 जिले हैं वहां, और पश्चिम बंगाल के 6 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में उसमें असर पड़ेगा, और लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ेगा। शिफ्ट करने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। हमने देखा कि ऑलरेडी जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। एक तरह से कह सकते हैं जो जहां प्रभाव हो सकता है, जहां आपदा का असर हो सकता है, उन इलाकों में तैनात हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को मिला दे तो 37 टीमें एनडीआरएफ की वहां उस वक्त मौजूद है, जिसमें से 20-22 टीमें ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। करीब 15 टीमें कह सकते हैं कि स्टैंड बाई मोड में मौजूद है, तैयार अवस्था में है। उनको कहीं भी किसी भी वक्त लगाया जा सकता है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में वो काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने, मुमकिन है कि उन्होंने राज्य सरकारों से भी जायजा लिया होगा कि किस तरह की इस वक्त में जरूरत है, क्या कुछ उनको और भी चीजें चाहिए, क्योंकि सिर्फ जो एक तरह से कह सकते हैं एनडीआरएफ आपदा में जो तुरंत कार्रवाई करती है, सिर्फ उसकी बात नहीं है, उसके अलावा और भी चीजें हो सकती है। राशन की बात हो सकती है, या फिर बाद में जो दिक्कतें आएंगी, पावर ट्रांसमिशन लाइन, कम्युनिकेशन लाइंस, रोड नेटवर्क, इस तरह की जो तमाम दिक्कतें आ सकती हैं, तो उन दिक्कतों से निपटने के लिए राज्य सरकारों की तैयारियां हैं कि नहीं है तैयारियां। तो इन तमाम बातों को लेकर, और निश्चित तौर पर एक निर्देश प्रधानमंत्री का अमूमन जो इस तरह की बैठकों में होता है कि सबसे ज्यादा जो ध्यान, जो सबसे ज्यादा फोकस लोगों की जिंदगियां बचाने पर होना चाहिए, किसी भी एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस तरह की कोशिश होनी चाहिए केंद्र और राज्य मिलकर। और शायद यही वजह है कि वो इस उच्च स्तर से वो बैठक कर रहे हो। अब मुमकिन है कि आप देखेंगे कि इस बैठक से पहले भी उन्होंने पूरी हालात का जायजा सरकार के उच्च पदाधिकारियों से लिया था, पूरी स्थिति का जायजा लिया था, गृह मंत्रालय से भी उन्होंने जानकारी ली थी। उसके बाद उन्होंने ये पूरी बैठक बुलाई है, और एक तरह से एक संदेश भी जाता है कि प्रधानमंत्री खुद इस पूरी स्थिति को लेकर, इस आपदा को लेकर चिंतित है। वो खुद पर्सनली मॉनिटरिंग कर रहा है तमाम जो रिलीफ रेस्क्यू वर्क की, और उनका पूरा ध्यान है। तो एक तरह से न सिर्फ एक उत्साह जो इस काम में लगे हुए लोग हैं, रिलीफ वर्कर्स हो, चाहे एनडीआरएफ को हो, एसडीआरएफ को, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लोग हो, या राज्य सरकार के अन्य कर्मी हो, तो उनका भी उत्साह बढ़ता है। और निश्चित तौर पर अगर इसका भी असेसमेंट किया जा रहा होगा कि सेना की क्या जरूरत पड़ सकती है, इंडियन एयरफोर्स, नेवी की किस तरह की जरूरत पड़ सकती है, उनको कहां पर स्टैंड बाई में रखना है। तो आज से लेकर एक तरह से कह सकते हैं कल शाम तक का वक्त है इस तैयारियों में, और कहीं किसी तरह की चूक ना रहे, वो निर्देश जरूर प्रधानमंत्री इस वक्त दे रहे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, और हमको पता है कि मनमोहन एक तरह से सुपर साइक्लोन जैसी स्थिति बनी है, हालांकि अभी कोस्ट से बहुत दूर है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि जब 20th आफ्टरनून ये टकराएगा कोस्ट से, जब लैंडफॉल होगा, तो उस वक्त भी 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा तक
की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, वो 180 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं चल सकती है, तो वो काफी खतरनाक होती है। उस हवा के साथ अगर बारिश जैसी संभावना भी बने तो एक तरह से वो एक विकराल रूप ले सकती है। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है और एक तरह से अवेयरनेस ड्राइव की भी बहुत जरूरत होती है। हमने देखा कि तस्वीरों में एनडीआरएफ लगातार अवेयरनेस ड्राइव में लगा हुआ है लोगों को कि इस आपदा के वक्त में, ऐसे तूफान के वक्त में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और तमाम लोग पक्के मकानों में शिफ्ट हो जाए, कोस्टल इलाके से खास तौर पे सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। और राज्य सरकार को इसमें जो कुछ भी मुमकिन जरूरत है, देखिए ये जो तैयारियां पहले से केंद्र की तरफ से की गई है, तो एक तरह से राज्य की मांग से पहले ही ये तैयारियां की गई है और राज्य की अगर कुछ और मांग भी है तो उस पर भी कैसे त्वरित गति से कार्रवाई हो, उस बारे में निश्चित मुमकिन तौर पर प्रधानमंत्री निर्देश दे रहे होंगे। तो बेहद ही पूरी महत्वपूर्ण बैठक, और हम देख चुके हैं कि एक जो डिजास्टर का एक पूरा तंत्र जो खड़ा किया गया है, जिला तक में हम एक तरह से कह सकते हैं डिजास्टर से निपटने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए, रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए, चाहे सरकारी स्तर पर बात की जाए या वॉलंटियर्स की फौज खड़ी करने की बात हो, एक तरह से पिछले 5-6 वर्षों में चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए, चाहे ट्रेनिंग के जरिए बहुत ज्यादा ध्यान आपदा प्रबंधन पर दिया गया है और एक तरह से दुनिया में एक मॉडल मुल्क की तरह भारत आपदा प्रबंधन में उभरा है। और हमने देखा कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी भारत ने तमाम मुल्कों की मदद की है। तो उस लिहाज से वो उन तमाम एक्सपीरियंस के नजरिए से और पिछले जो साइक्लोन खासतौर से फोनी, बुलबुल, हुदहुद, इस तरह के तमाम तूफानों की बात की जाए जो इसी स्तर के थे या उन तूफानों में भी जो एक्सपीरियंस एक तरह से रहा है, जो कमी बेची रही है, जो एक तरह से टीम वर्क के तरह टीम ने काम किया है। हमको याद है पिछले तूफानों में लाखों लोगों को घर पहुंचा, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। तो उस तरह का एक टीम वर्क रहे और एक कोऑर्डिनेशन रहे, तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री की यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण कही जा सकती है। मुनमुन, Absolutely. So the center is going to pull out all stops in order to ensure that the damage is minimized. Always in such situations, a zero casualty target is set, and once again, all stops are being pulled in order to ensure that there is really minimum damage once again in this situation. And the center is going to draw on the previous experience as well. States too will be drawing on previous experience in order to ensure that. Well, that's it then in this edition of the news. News and updates will continue on DD News and DD India.